Dear students, it is the fourth video of week 14 and we are learning about the water resources in Pakistan and the challenge. In this video, we'll talk about the water policies. Dear students, as you all understand from previous discussion that water is a matter of life and death for everyone on the planet, and especially water is the backbone of the agri-based countries like Pakistan. Therefore, since the domestic life and economic life of our country is based on the water, thereby we need to have a serious concern over the water and should have a water policy. In 1960, in Ayub Khan's era, Pakistan settled the dispute with India, and later on the dams were constructed and Pakistan was able to frame a 5-year progressive plan, clear, which set the basic infrastructure of the Pakistan development. But after that, unfortunately, the political governments were least bothered about the water, and they remained busy in other issues, and the water was denied it. But later on, when the shortage of water, droughts, pressure from the Indian government, they raised, then the people started thinking about the water. Fine. So, water is one of the very important thing. It's such an important thing. The Holy Prophet ﷺ said कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी के बहाने को मना फरमाया, हत्ता कि अगर कोई शख्स वुजू के लिए भी पानी को ज़ाया करता है तो आपने उससे भी उन्हें भी बड़ी सख्त तंबीह फरमाई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ का भी हिसाब लेंगे। क्लियर? यहाँ तक कहा गया कि we should not waste a single drop of water even though our river is flowing in front of the door. कि अगर किसी के घर के सामने से पानी का दरिया भी जा रहा है तब भी उसको पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। Clear? Therefore, in the context of these, Pakistan needs to develop a policy. In 2018, Pakistan formulated water policy, national water policy, first time. And in this national water policy, it was decided that water is the major need and is now limited, and we should utilize it efficiently, and the cost of water should be recovered from the irrigation system. The policy also looks at future impacts of the climate change on the water. It talked about water pricing and mentioned the need of the regional cooperation challenge. इस पॉलिसी के अंदर ये चीजें आ गई, क्या क्या डिस्कस हुआ। नंबर 1 कि पाकिस्तान के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, इसको बेहतर करना है, और वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर जो कॉस्ट्स आती हैं इरिगेशन सिस्टम के, जो डैम्स हैं और रिवर्स हैं और कैनाल्स हैं और राजबाज हैं और ऑल दैट, उसकी कॉस्ट जो है वो वसूल की जाए, द ड्यू कॉस्ट। देन वाटर पॉलिसी 2018 also analyze the challenge, climate challenge, ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, fine, okay, and water policy decided that Pakistan should develop
a very agile policy to talk about the regional issues related to water. जो हमारे पानी के disputes हैं मुख्तलिफ countries के साथ वो चलने चाहिए. For example, dispute with India and dispute of the Kabul River system. Clear? According to this policy, different acts were made. Punjab Water Act 2019 कि Punjab Water Act बना in 2019. The Balochistan Integrated Water Resources Management Policy 2006, it's old one. Sindh's Agriculture Policy 2018, KP's Drinking Water Policy 2015 and Climate Change Policy in 2016 के सूबों ने अपने तौर पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्ट्स और पॉलिसीज बनाई ताकि वो अपने सूबे के अंदर अपने इलाकों में पानी की सूरत हाल को बेहतर कर सके. There are shortcomings in these policies. There were many shortcomings. Number one, absence of the scientific basis. That these policies were least scientific rather than they were based on observations. Clear? Number two, water quality issues. इसके अंदर water की जो quality है उनके issues को neglect किया गया. Only they have talked about the availability, usage and price of the water. लेकिन जो water की quality है कि उसमें pollution का water है, उसमें जैसे हम बार बार कह रहे हैं arsenic है. Clear? Absence of the targets. कोई target तय नहीं किया गया कि how much water we need and how much we have to do it. Whereas there are many countries in the world which have settled the targets that they have settled targets for the precise time. दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जिनके यहाँ water resources बहुत कम थे, but they developed it fine. Therefore, the water policy should be sustained. Dear students, move next. Water distribution issues within provinces. जो सूबों के दरमियान में पानी की तकसीम का मामला है ये भी बहुत बड़ा इशू है between Punjab, Sindh, KPK and Balochistan. Why it is? Because life of all the people depends on the flowing water in the rivers, and most of the water that flows into the river starts from the northern and northwestern mountains and flows into the areas of KPK mostly, and then flows into Punjab, and then Punjab it flows into the Sindh. Growing scarcity of water resources in the country is increasingly becoming a source of conflicting among the countries. Okay, तो जो पानी तकसीम किया जाता है सूबों के दरमियान, the canal water is distributed among provinces under 1991 water accord. जो 1991 में सूबों के दरमियान में पानी का मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक सूबों को जो है वो पानी तकसीम किया जाता है. A baseline volume of 144.8 billion cubic feet water जो है 144.8 billion cubic feet water, ये पानी की एक डिवीजन है, is divided among the provinces. जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनको डिवाइड किया जाता है. About 48% share goes to Punjab, 42% share given to Sindh, 7% is given to Khyber Pakhtunkhwa, and 3% is given to Balochistan. But in different seasons, when the water flows, जब मुख्तलिफ seasons में पानी की जो flow है वो कम हो जाता है बारिशों की कमी की वजह से या किसी और वजह से, then the water provision to these countries, to these provinces cut short. तो पानी का जो flow है इन मुल्कों सूबों के अंदर वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से अब obviously the crops
in those areas are disturbed. तो इस वजह से पंजाब, Sindh and Balochistan, they keep complaining and sometime agitating against one another over these issues. For example, Sindh alleges Punjab of water theft. Sindh वाले ये कहते हैं कि that Punjab conceals the water, whereas Balochistan accuses that Sindh is not providing the proper amount of water from Guddu and Sakhar Biraj. Clear? Guddu and Sakhar Biraj से जो पानी बलूचिस्तान को दिया जाता है वो उन्हें प्रॉपर पानी नहीं दिया जाता. Well, this is, students, we have learned a huge amount of reasons of the water crisis. Mismanagement, political differences, unintelligent use of the water, clear, global warming, less pricing, poor infrastructure. ये बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं. Now, what are the solutions? Political ownership of the challenge. That political parties should make the water as their basic insignia. Political parties को पानी को अपनी सियासी campaign का हिस्सा बनाना चाहिए, and they should promise the people that they'll provide the fresh water and they will ensure the preservation of the water, कि वो पानी को save करेंगे. That should be a national campaign. Policies, reform and the government. There is always fill the vacuum between policies, reforms and their implementation by devising a detailed implementation plan. कि सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वो सिर्फ पॉलिसी ही ना बना दें, बल्कि वो क्या करें कि उन पॉलिसीज को बाकायदा शक्ल दें और उसको implement करें. For example, someone has said, we do not have a water crisis, we have a failure of governance with regard to the water issues. कि किसी एक्सपर्ट ने कहा कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, असल में हम लोग, हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो फेल हैं पानी के मसले को हल करने के लिए. The government needs to institute a major paradigm shift that promotes the more judicious use of water. कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो वाटर यूजिंग पॉलिसी बनाएं कि वाटर को प्रिजर्व किया जाए, उसको वेस्ट ना होने दिया जाए. जो लोग वाटर यूज करते हैं उनको इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो पोल्यूशन ना फैलाएं. वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या मेंटेनेंस है उसको देखा जाए. मिसाल के तौर पर इन सम ऑफ द कंट्रीज वेयर दे फाइंड रिजर्व ऑफ वाटर, इस जगह पे पॉन्ड देखते हैं, बट क्लियर विच द पॉन्ड्स फॉर एग्जांपल इन पोटवा रीजन, इन बलूचिस्तान रीजन, पानी जो है वो इन इलाकों में छोटी छोटी झीलों में खड़ा होता है. Those countries built beautiful fences and hedges around. कि वो लोग क्या करते हैं कि उस पानी के जखीरे के गिर्द तो खूबसूरत सी फेंस लगा देंगे. They start growing plants around it. Clear? So they beautify it. Not just it beautify the area, but it becomes preserve resource for wildlife. उसके किनारे पर जड़ी बूटियां फूल उग सकते हैं. एनिमल जो हैं, परिंदे जो हैं वो उसको यूज कर सकते हैं. नंबर 2, वाटर कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज. के मुल्क के अंदर वाटर कन्वर्जन डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज जो हैं जिससे वाटर एफिशिएंट हो जाए वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए. एंड वाटर अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल. Another solution of the water is increase agriculture efficiency. It is very important that 95% of the water is used in agriculture and most of the water is wasted. Why?
Clear? Because of the old methods of the irrigation. Use latest technology and methods for efficient water utilization. Clear? Farmer can use precision watering rather than flooding their fields. कि उनको चाहिए कि पाइप के जरिए precision watering is a technology used throwing water on the plant as it requires. पानी को पाइप के जरिए फसल के ऊपर जितना जितना चाहिए होता है उतना उतना फेंका जाता है, जबकि पंजाब में फ्लडिंग द वाटर के पानी को एक तरफ खोलते हैं, then it irrigates. Clear? Use drip irrigation. Similarly, water intensive crops as sugarcane and rice may be replaced with lower water demanding crops. के ये भी एक सजेशन है कि जैसे शुगर केन है, इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसकी जगह पर कोई और क्रॉप्स की जा सकती है, बट these two cannot be. Rather than these crops be cultivated in the areas where plenty of water is available. उन एरियाज में इसकी काश की जानी चाहिए जहां पर पानी ज्यादा है, whereas the areas where there is already the shortage of water, such crops should not be cultivated. But we cannot avoid it. Water metering and pricing. Make the metering of the water compulsory for all users from domestic, agriculture or industrial units. कि जितने भी लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बिजली प्रोवाइड की जाती है, द वाटर मीटरिंग, उसी हिसाब से पानी भी जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए और उसकी कीमत रखी जाए. एंड पनिशमेंट ऑन ओवर यूज ऑफ वाटर, कि अगर कोई बंदा पानी को ओवर यूज करता है, जाया करता है, तो उसको सजा दी जाए. एंड लास्टली द साइकिल ऑफ वाटर वेस्ट. वेस्ट वाटर, जो पानी जाया हो जाता है उसको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ नालों में पानी जा रहा है और मच मोर. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट method which is being used by many countries of the world where the water is short. तो पानी को दोबारे रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अजीज तुलबा, हमने एक मुकम्मल गुफ्तगू की पानी की कमी के ऊपर. खुलासा दोबारा बता देता हूं कि पानी जिंदगी के एक अहम जुज़्व है. पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पानी की एक बड़ी मिकदार पाई जाती है, जबकि हमारे जिंदगी का इन्हिसार पानी पर है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए पानी इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक यूज में. लेकिन कुछ अरसे से आबादी बढ़ने की वजह से, पानी के कटाव की वजह से और दीगर कई मामलात की वजह से पानी जो है उसकी कमी हो रही है. लिहाजा हमको बाकायदा गवर्नमेंट को बाकायदा पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहिए और पानी की मीटरिंग की जाए और इसकी प्राइस रखी जाए, ताकि पानी के इस रिसोर्स को महफूज बनाया जाए और हर गवर्नमेंट को जिन ममालिक के साथ पानी के मामलात चल रहे हैं उनके साथ मामलात को बेहतरीन तरीके से सेटल किया जाना चाहिए. Dear students, I'm sure that you have learned all. Thank you very much.